Good morning students, welcome to online class. I hope you all are fine. Today we are going to start the next exercise of chapter 14, that is exercise 14.2, and today's topic is addition and subtraction of money. So let's start with the first question of that exercise, which is add the following, and the question is rupees 56.75, or you can say as 56 rupees 75 paise plus rupees 34.10 or 34 rupees 10 paise. Okay, first of all we will write rupees and paise at the top. Okay, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, rupees and paise. Then we will write 56 rupees 75 paise, 34 rupees and 10 paise. Okay, now we will add both the numbers. 5 plus 0 5, 7 plus 1 8, 6 plus 4 10, 1 carry, 5 plus 3 8 plus 1 9. So your answer will be rupees 90.85, or you can write as 90 rupees and 85 paise. Okay, see next question, which is rupees 324.60 plus rupees 202.55 plus rupees 56.70 or 324 rupees 60 paise, 202 rupees 55 paise and 56 rupees and 70 paise. So first of all write rupees and paise on the top, then write all the numbers according to your column. The first is 324 rupees 60 paise, next is 202 rupees 55 paise, next is 56 rupees and 70 paise. Okay, now we will add all the three numbers. 0 plus 5 plus 0 5, 6 plus 5 11 plus 7 18, 1 carry, 4 plus 2 6, 6 plus 6 12 plus 1 13, 1 carry, 2 plus 0 2 plus 5 7 plus 1 8, 3 plus 2 5. So your answer will be rupees 583.85. Okay, so in this way you can add the amount. Okay, next is subtract the following. See first question, rupees 668.95 minus rupees 547.44 or 668 rupees 95 paise minus 457 rupees 44 paise. So first of all write rupees and paise at the top, then we will write the first number, which is 668 rupees and 95 paise. Next is 457 rupees and 44 paise. Now we will subtract starting from the ones place. 5 minus 4 1, 9 minus 4 5, 8 minus 7 1, 6 minus 5 1 and 6 minus 4 2. So your answer will be rupees 211.51 or 211 rupees and 51 paise. See next question, rupees 1250.65 minus rupees 970.80, or you can write as 1250 rupees 65 paise minus 970 rupees 80 paise. So first of all you write rupees and paise. Now write on the first digit 1250 rupees and 65 paise. Next is 970 rupees and 80 paise. Now subtract. Start subtraction from the ones place. 5 minus 0 5, 8 can't be subtracted from 6, so we take borrow, it will be 6 and it will be 9. 16 minus 8 8, 9 minus 0 9, it will be 14. 14 minus 7 7, it will be 11. 11 minus 9 2. So your answer will be 279.85. Okay, now see next question, which is question 3. Solve the following. The first part is Akshay had rupees 350 in his piggy bag. His father gave him rupees 350 more. How much money does Akshay have now? अक्षय के पास पिगी बैग में कितना अमाउंट था, रुपीज़ 350. उनके फादर ने उन्हें और अमाउंट दिया, विच इज़ 350. ओके, तो हमें बताना है कि अब उसके पास कितना अमाउंट है. पहले उसके पास था, उसके पास और अमाउंट ऐड हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एडिशन करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आवर स्टेटमेंट इज, the first statement is Akshay had money in his piggy bag is equal to rupees 350. Father gave him is equal to rupees 350. And the last statement is Akshay have money
or you can write as total money he had. Okay, now add both the numbers and you will get rupees 700. Okay, now see next question, which is Amit saved rupees 405 rupees and 50 paise, 155 rupees and 70 paise and 344 rupees and 80 paise in 3 months. अमित ने सेव किया 3 मंथ में अमाउंट. फर्स्ट मंथ में उसने सेव किया 405 रुपीज़ 50 पैसे, सेकेंड मंथ में उसने सेव किया 155 रुपीज़ 70 पैसे एंड थर्ड मंथ में उसने सेव किया 344 रुपीज़ 80 पैसे. ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच डिड ही सेव इन ऑल, उसने टोटल अमाउंट कितना सेव किया है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज Amit saved in 1 month is equal to rupees 405.50. Okay. Amit saved in second month he saved 155 rupees and 70 paise. Amit saved in third month 344 rupees and 80 paise. Okay. Total amount he saved. For this we will add all the given amount. 0 plus 0 plus 0 0. 7 plus 5 12, 12 plus 8 20, 2 carry, 5 plus 5 10 plus 14, 14 plus 2 16, 1 carry, 5 plus 4 9 plus 1 10, 1 carry, 4 plus 1 5 plus 3 8 plus 1 9. So your answer will be 906 rupees. Okay, see next question. Manu had rupees 100. He spent rupees 43.20 on pistols and rupees 37.45 on crayons. How much money is left with him? मनु के पास टोटल 100 रुपीज़ थे, उसमें से उसने पिस्टल्स पर स्पेंड किया है 43 रुपीज़ 20 पैसे और क्रेयॉन्स उसने खरीदे हैं 37 रुपीज़ 45 पैसे के. ओके, तो हमें बताना है कितना अमाउंट लेफ्ट रह गया उसके बाद. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल विल ऐड द अमाउंट स्पेंड बाय मनु. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया है. ओके, सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज मनु स्पेंड ऑन पेस्टल्स विच इज़ रुपीज़ 43.20. नेक्स्ट इज मनु स्पेंड इन क्रेयॉन्स विच इज़ 37.45 and first we will calculate total amount he spent. For this we will add the given amount. 0 plus 5 plus 0 plus 5 5, 2 plus 4 6, 3 plus 7 10, 1 carry, 4 plus 3 7 plus 1 8. So उसने अमाउंट स्पेंड किया है टोटल 80 रुपीज़ एंड 65 पैसे. मनु हैड मनी 100 रुपीज़. He spent 80 rupees 65 paise and money left with him. For this we will subtract the given amount. So 5 can't be subtracted from 0, so we will take borrow. It will be 10, it will be 9, it will be 9 and it will be also 9. So 10 minus 5 5, 9 minus 6 3, 9, 9 minus 8 1. So कितना अमाउंट उसके पास लेफ्ट रह गया 19 रुपीज़ एंड 35 पैसे. ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन. From the sum of 576 rupees 40 paise and 188 rupees 50 paise subtract rupees 245.50. सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट्स को हमें प्लस करना है अमाउंट को, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से हमें थर्ड वन सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. राइट ऑन द फर्स्ट डिजिट विच इज़ रुपीज़ एंड पैसे. 576 रुपीज़ 40 पैसे, 188 रुपीज़ एंड 50 पैसे. अब हम इसे ऐड करेंगे. 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 8 14, 1 कैरी, 7 प्लस 8 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7. ओके, नेक्स्ट we have to subtract 245 rupees 50 paise from 764 rupees 90 paise. So first of all we'll write rupees and paise and write down the greatest number which is 764 rupees and 90 paise. Write down the next number 245 rupees and 50 paise. Now start subtraction. 0 minus 0 0, 9 minus 5 4, 4 can't be subtracted from 5, can't be subtracted from 4, so we'll take borrow. It will be 14 and it will be 5. 14 minus 5 9, 5 minus 4 1, 7 minus 2 5. So your answer will be 590 rupees and 40 paise. Okay, so in this way you have to complete this exercise. So your homework will be
Complete exercise 14.2 in your fair notebook. If you have any query, you can ask in your WhatsApp group. Okay? Thank you and have a nice day.